Psychology, मनोविज्ञान, is the scientific study of mind and behavior. So, psychology is concerned with almost all aspects of our lives. That's why everyone is interested to know about psychology. हर कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है साइकोलॉजी में, बहुत ज़्यादा. But there are so many misconceptions about psychology. Like many people think that psychology deals with treating mad people, कि वो पागल इंसान जो होते हैं उनको ट्रीट करती है. And some other feels that psychologist can read your mind just by looking at you, by your face or your forehead. But they tend to equate psychologists with astrologers. Please, psychology is a different field. It's not about astrologers, numerologists, palmists. Psychology is different. And you might have heard about the terms psychology, psychological, mental, etc. But क्या आप जानती हैं साइकोलॉजी होती क्या है? What is the meaning of psychology? And how did it evolve? Is psychology a science or art? क्या है साइंस? क्या है साइकोलॉजी? क्या है आर्ट? So let's now discuss about psychology. So psychology is derived from two Greek words, psyche, which means soul or breath, and logos, which means knowledge or study. So psychology was a study of the soul or mind, but recently and now established itself as a scientific discipline which deals with processes underlying human experience and behavior. And also, psychology is defined as a science which studies mental processes, experiences, and behavior. So, let's try to understand these three terms which are used in this definition, that is, mental processes, experience, and behavior. So, let's now discuss mental processes. As we can say that experiences are internal to the experiencing person, कि जो हमारे experience हैं वो internal हैं, and we refer to state of awareness or mental processes. Like we use our mental processes when we think or try to solve a problem. जब हम किसी problem का solution search करते हैं, जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को. लाइक व्हेन वी थिंक और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आवर ब्रेन एक्टिविटीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रेन इमेजिंग. और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस सेम है, बट दे आर इंडिपेंडेंट. और ब्रेन की तरह आवर माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन. ब्रेन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लूज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस. हमारा माइंड किस तरह से फंक्शन करता है. इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं. वी ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज a knock on the door while we are asleep. And some psychologists have also shown that we also learn and remember in our sleep. Mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, feelings are of great interest to psychologists, and they study these processes trying to understand the mind works and helps us to improve the uses and application of all these mental capacities. So that's all about the mental processes. Let's now discuss the next term. Experiences are subjective in nature. हम
किसी को भी डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करके और किसी के बारे में जानकर उसके एक्सपीरियंस का पता नहीं कर पाते हैं, एंड ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर अबाउट his or her experiences. So experiences are embedded in our awareness or in our consciousness. Like when a yogi meditates to enter a different level of consciousness and creates a new kind of experience, और जब एक ड्रग अडिक्ट एक डिफरेंट काइंड की ड्रग लेता है टू गेट अ हाई, एंड इवन दो सच ड्रग्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, but experiences are influenced by internal and external conditions of the experiences. Like if you are traveling in a crowded bus during a hot summer day, you may feel a discomfort, and when you are going for a picnic with some close friend, you may not experience the usual discomfort. So from this, the nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions. तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पर, जिनको कि समझ कर हम इजीली बता सकते हैं. बिहेवियर. Behaviors are responses or reactions we make. When something is hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action, and you are taking an examination and can feel your heart pounding. When you decide to go for a particular movie with a friend, behaviors may be simple or complex, short or enduring, and some behaviors are overt. मीन्स जिनको कि हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट सम बिहेवियर आर इंटरनल और कोवर्ट. Like when you are in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand muscles twitching and trying to experiment with a move. आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एक मूव के साथ. So all behaviors, चाहे वो covert हो या फिर overt हो, all are associated by some stimulus in the environment or changes that happen internally. या तो वो हमारी बॉडी के चेंजेस से होते हैं या फिर जो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनके कारण हमारा बिहेवियर बनता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. Thank you so much for watching this video, and if you really like this video, do subscribe to my channel. And if you have any question or any doubt, you can comment me. Thank you.